Okay, from tomorrow I'll make sure that there is polls. Okay, since there are no polls for like past few days. All good. Okay, thank you, Abhay. Ballari students, thank you. Others, let me know. Please let me know. Okay, each one of you, please let me know, such that I know. Okay, everything is clear and everyone is able to hear me or can see the screen or not. Okay, and also students who are joining from YouTube live. Good evening. How are you all? Good evening. Yes, good. Okay, sweetie. Thank you, Path. Everyone, JNV students. Chittadurga students, I'm good. I'm good too. Okay, I'm good too. I'm good too. Thank you for asking. Yes. Bye. Thank you. I'm good. Yes. So yeah, I had a class now. So I just after I came from class, it was a little bit late. So sorry for the delay. Now, yes. So everyone has joined and everything is going on good. So everyone is ready with their books. Yes or no? Yeah, with the thumbs up. Let me know with the thumbs up. Everyone, let me know. Okay. Yes. Good. Okay. Yes, we are ready. Good. Nice. Nice students. Now, okay. Okay. So Uttara Kannada, Davangere, Chittadurga students have joined. Okay. AB section have joined. Ballari students have joined. Suman. Okay. Everyone is joined. Now, students. Okay. Welcome to today's session. My name is what? Someone with, your physics faculty over here. Uttara Kannada students, good evening. So we were talking about what, students? We were talking about work, power, energy. Just a second. Let me just set this up. Okay. So we were talking about work, power, and energy. Yes. In that we have already talked about a lot of things. Now right now what we are doing is we are talking about very simple terms. Okay. Very simple terms. Now, when we talk about in yesterday's class, we have talked a lot of things. Now, here the questions. Yes. Path. It is okay. So we are joining from wherever it is written JNV. It is all group of students. Okay. So now what a little complicated. I won't say it's complicated, but tricky. Up tricky banna start hoga. Okay? So make sure that you have you have understood about it. Make sure that if you don't understand, please let me know using the chat box. Okay. Stop me anywhere you want. Okay. 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 Kalaburgi students, good evening. Yes, very good. So make sure that you stop me. Now, so before going ahead, let us quickly go through the contents of today's session. The first thing is what? Quickly recall. We'll quickly recall what you were studying in the last class. Then there will be a small test. Okay. There's a small quick test. It's very simple to make sure that, okay, you have understood the concept. You have been studying. You have been taking care of all the homeworks. Yes. Then we'll talk about what types of forces. In that, we'll be talking about conservative force and non-conservative force. These are the two types of forces. Basically, we'll be talking about it. In that, in conservative force, we'll be talking something called closed path. Okay. Then we'll be seeing examples in this also. Don't worry. Then we'll be talking about the numerical. Okay. Then that's all for today. Then it will be what? Summary of today's session. Yes. Now, talking about what we have studied in the last class. Do you remember, students? Do you exactly remember what you studied in the last class? Or did you just forget it? Okay, Chitradurga and Parth Patel, please lower your emoticons. Very good. So do you remember, students, what you have studied in the last class? Can someone tell me? So I'll show you, but yes, very good. Yes, students. What we were talking about? What work done by variable force. As I said, let's say if I'm taking a force in this direction, and what, let's say the force varies with respect to x. In that I talked about what? The spring force minus kx. Yes or no? I talked about spring force. Yes, very good. And I told you that, let's say this is the varying force. If this is the varying force, now if I'm considering a small strip of it, now you know that the area of that strip, the area of that small strip is what? Basically, if I'm taking this is dx, now you know that this is what? This is force F1. Then you can take F1 into d into x. Yes or no? That is what? This is the small area, dA. And I told you that if I want the whole area, I can do what? F1 into dx plus F2 into dx
yes, dx1, dx2, and so on, and you will get the whole area. Yes, the whole area, that is A. Yes or no, students? Now I told you, students, now we can do what? We can basically integrate from what? From x1 to, let's say if I'm taking x1 to xi initial to xf, then if I'm considering from xi to xf, yes, and I'll get what? F dot dx. Yes or no? This, if I do it, I'll get the whole area. Or can I say that, students, you know that what? Force into displacement dx, sorry, force into displacement s is what? Is work done. Yes or no? And from this we get to know that the work done for the variable force is what? What, students? F dot dx is equal to work done. Yes or no? And I told you that this is for what? Only for what? The let's say if the displacement is in x direction. Displacement is in x direction. Yes or no, students? And if the displacement is in different direction, what will happen? Do you remember? If the displacement is in different direction, students, I told you that, like, let's say if I have force fxi cap plus f what? fi j cap plus fz k cap. Yes, and there is this dr. Basically, what is dr? dxi cap plus dy y cap plus dz k cap. Then the work done is basically f dot dr. Yes or no? And from this we got to know that f dot dr is basically what? Individual what force? Yes or no? That is f dot dx plus force into f dot, sorry, fx fy into dy plus fz into dz. Yes or no, students? This was the variable force for what? If the force is in all directions, that is what? The force is depending on x, y, and z. Yes or no, students? And this was the variable force that we got. Yes or no, students? Let me know. Let me know in the chat. Yes. Okay. Very good. Kalaburgi students, let me know. Okay. Good. Good. So, is there any doubt till now? Is there any doubt over here? So, always remember what? For the x direction, if it's only x direction, we have direct thing, that is what? F dot dx. Okay. That is integration. So, integration is from what? A limit. So, there will be a limit. So, you need to put the limit and you need to apply the what? The work done for x direction, basically. And this is the work done, basically. What is this? Work done. Yes, students. Very good. Nice, nice. Very good. Now, if that is the case, students, then here's a quick question for you guys. This is a very easy question. Please let me know what is the answer of this. Please let me know. See, the question says the work done by applied force F is equal to x plus x cube from x is equal to 0 meter to x is equal to 2 meter, where x is displacement. So what is happening? Let's say there is a force, or there is a body, and there is a variable force that is being applied, and the body is being displaced from 0 to 2 meter. Okay, this is what it's saying. Now they want what? They want work done. So please let me know, students, what is work done? This is very, very simple. Very, very simple. I'm giving you exactly 2 minutes of time to tell me the answer. Chitradurga students and Ballari students, is it the right answer? Let me know. Let me know. Okay, Ballari, Chitradurga students. Now check your answer. Parth, very good. JNV Tumkur students, very good. Chitradurga, okay, 11th. Who is it? JNV Chitradurga 11th, A section or B section? So one of the section in Chitradurga has given the right answer. So you students joining in YouTube, let me know. Yes, very good. Sweetie, let me know. This is very easy. Davangere students, what is the answer? Tirth, Madiha, Abhay. Abhay, what is the answer?
Can I know, Abhay? Acha, okay, no problem, no problem. So please try to answer this question, okay? Now, okay, if that is the case, students, then we'll be solving this. Okay, let us solve this. See, some certain students are given 13 joule as the answer, and certain has given 6 joule as the answer. Let's check which is the right answer. Okay, so some of the JNV students have said it is the right answer. Let's see which is the right answer. Now it is given that force is equal to x plus x cube, and they told that the displacement is happening in x direction itself. How? Over here they have told x and x, so basically in x direction it is from 0 to 2. Yes or no? Now you know the direct formula. The work done is what? From f dot dx. Yes or no? Because it is only in x direction. Now students, as I said, it is from x1 to x2. Now over here, Uttarakhand students, check your answer. Now here the work done is basically what? X1 is what? 0, and x2 is what? 2, and the force is what? X plus x cube into dx. Yes, till here it is right or not? Let me know. Till here it is right or not? Students, let me know. Now you know that work done is equal to integration of 0 to 2 x, very good, x plus x cube into dx. मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, वर्क डन इज इक्वल टू 0 to 2 x into dx plus 0 into 2 x cube by x cube, x cube into dx. Now can I write work done equal to, इसका इंटीग्रेशन होगा x square by 2 from 0 to 2 plus x 4 by 4, yes, divided limit from 0 to 2. ऐसा नो? अगर मैं इसका वर्क डन लिखूंगा तो ये क्या होगा? 2, देखो पहला चीज तो 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2, ये एक हो जाएगा, प्लस एक और हो जाएगा 2 to the power 4 बाई 4 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2, और आपको पता है ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा. अब इसके बाद अगर मैं लिखूंगा तो क्या होगा? इसके बाद जस्ट अ सेकेंड. Now you know that, sweetie, very good. Now you know that work done is equal to 2 square क्या होगा? 4 by 2 हो जाएगा, और आपको ये पता है प्लस ये क्या होगा? 2 to the power 4 क्या होगा? 2 to the power 4 कितना होगा? देखो आपको पता है 2 into 2 into 2 into 2, तो 2 to the 4, 2 to the 4, 4 into 4 is 16. Very good. So 16 by 4 हो जाएगा, and work done is equal to 2 plus 4, that is 6 joule. And those who are given the right answer as 6 joule, very good. Okay, very good. Now see, everyone is given the right answer. Now let me know, Uttarakhand students, where did you do the mistake? See, this is a very simple problem. If you are doing mistake, then it means that you haven't gone through the session, or you haven't done the, let's say, revision of it. Chitradurga students, let me know, where did you do the mistake? Ballari and Chitradurga students, this was the answer, yes or no? Let me know, students. ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು? ಅಚ್ಚಾ, ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಹಾ, so make sure that you don't do, hey, wait, that's not differentiation. Chitradurga students, what are you talking? Huh? This is integration alwa. Yes, Ballari students, okay. Suman, very good. Chitradurga students, huh? This is integration. Yes, okay. Yes or no? Let me know, students. This is integration, this is differentiation. Yes or no? You know the difference, right? ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ maths sir ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, otherwise the maths faculty from Avanti will be very angry. Okay, so make sure that you know the difference. Don't do these mistakes. Okay, now, okay, is it good? Very good. Okay, Tunku students, okay, let me know, okay, if there are any doubt. Now coming into type of forces, now we have talked about the force, we have talked about work done. Now talking about a conservative force, two types of forces. Okay, one is
conservative force and another is non-conservative force. Have you got any slight idea what is a conservative force or a non-conservative force? Can you guess what is a conservative force or what is a non-conservative force? Is there any guess, or can you tell me what it is? If you know exactly what it is, then it's very good. But don't worry, if you don't know, we'll talk about it. Okay, we'll talk about it. Yes. Okay. Very good. Very good. Very good. Very nice. See, I'll tell you one thing. Okay, why you have to study this non-conservative force in order to get the feel of potential energy. अगर आपको एक पोटेंशियल एनर्जी का फील चाहिए ना, देन आपको कंजर्वेटिव फोर्स समझ में आना चाहिए. अगर आपको कंजर्वेटिव फोर्स समझ में नहीं आएगा ना, तो आपको वो पोटेंशियल एनर्जी का फील नहीं आएगा. हाँ, नाउ and Chitradurga and Chitradurga students, A and B sections, both the section has given the right answer. Now, what is a conservative force? See, over here, let us talk about the definition first. In conservative force, it says that the work done. Yes, very good, Abhay, very good. Okay. So what it is saying that the work done by these forces means the conservative force, it doesn't depend on the path. Okay, one thing is it doesn't depend on the path. Don't worry, we'll talk about it. Another thing is it doesn't depend, it depend only and only on initial. What is saying? It is depending only and only on initial and final position. So what it is saying? It doesn't depend on the path, but it is depending on the what initial and final position. Now let's talk about a path. Okay, now what will I do is I have point A and I want to go to point B. ठीक है, क्या हुआ कि A point पे आप लोग हो और B point में आइसक्रीम है. ठीक है, आइसक्रीम है, आइसक्रीम स्टॉल है. ठीक है, तो क्या हुआ कि आपने क्या किया कि आपका एक फ्रेंड था. ठीक है, एक और फ्रेंड था आपके पास. So your friend was with you and he applied a force. Okay. Now students, what is happening over here? There are three paths that you can take. Okay. This is path 1. ये जो path है, ये path 1 है जो आपने लिया रेड वाला. ये path 2 है जो ग्रीन वाला ले रहे हो ना, ये path 2 है. और एक और path है कि path 3 है. ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है कि जो path आप ले रहे हो ना, it is going to what? B only. So over here it is going to point B only. See over here, remember that over here all the three paths कहाँ जा रहा है? आइसक्रीम पार्लर के पास ही जा रहा है ना? आइसक्रीम पार्लर के पास ही जा रहा है कि नहीं? जो भी बात आप ले रहे हो, आप अभी आइसक्रीम पार्लर के पास ही जा रहे हो. Now, yes, now here your friend he applied a what? He applied a force. He applied a force. Now students, if the applied force is a conservative force, what is happening? If the applied force is a conservative force, okay, just a second. If it is a conservative force, तो क्या होगा कि जो भी आप वर्क करोगे, क्यों? Because you are moving from A to B, whatever the work that you make, that is, let's say from path 1 is work done is W1, path 2 W2 and path 3 W3. अगर वो एक conservative force है, then all the work done will be what? Equal. Did you get it now? So work done by the force applied at point A in moving an object from point A to B is same as for path 1, path 2 and path 3. So work done doesn't depend on the path. अब समझ में आ रहा है कि देखो, अगर जो भी path ले रहे हो ना, वो उसको मैटर नहीं कर रहा है कि जो भी होगा आप जो भी करोगे, work done equal to सेम ही होगा. वो जो वर्क डन होएगा ना, वो सेम ही होगा. मान लो अगर W1 में वर्क डन 10 आया, तो अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो W2 भी 10 आएगा, W3 भी 10 ही आएगा, 10 joules. बताइए स्टूडेंट्स, लेट मी नो इन द चैट, yes or no. So what is happening? So over here it is said that what? It doesn't depend on the path, it only depends on the initial and final position. Yes. So over here the conservative force depends on the initial and final position itself. That is A. This is the final position.
and what the initial position. Yes. Okay, good. Others, let me know. Is there any doubt? Yes. So what is happening? So if the work done is same for all the path, that is path 1, path 2, path 3, then it is what? It is the conservative force. Now, if that is the case, then what are the, very good students, what are the examples of conservative force? एक example है what? Gravitational force. Okay. एक example है spring force and एक example है electrostatic force. Now these three forces are conservative force. So what does it mean? So here it doesn't depend on the path. Path पे depend does not depend on the path. It depends on the final and initial position. So students, what will I do is in this class I'll be proving this. What? Gravitational force is a conservative force, that I'll prove. But the homework is you need to prove that the spring force prove spring force is a conservative force. Okay, you need to prove this, students. So in the, let's say I'll give you 2 days of time. So on Friday I want you to tell me whether you have proved the spring force is a conservative force or not. Okay, today we'll be solving about gravitational force. Okay, how gravitational force is a conservative force. Okay, let me know, students. Is the homework clear? Okay, others, is this homework? Yes, the homework is you need to prove the spring force is a conservative force. You need to prove that what? The spring force is a conservative force. Okay, Uttarakhand students, very good. Now what we'll do is we will try to see or check what is happening. Is gravitation force is a conservative force? Okay, now I have a object of mass m and I want to move this object from A to C. Okay, what is happening? I want to move the object from A to C. So students, can I tell there are 2 paths that can be taken to reach from A to C? Yes, that is, one path is this is path 1, yes or no, and this is path 2, yes or no? Yes, that is what path 1 is directly, that is कहां से कहां? A to C में directly जा सकता हूं, है कि नहीं? और एक और path है, what is that path? Path है कि A, B and C, है कि नहीं? Now students, you need to check the work done for both the paths. ठीक है? अगर work done by gravitation, अगर वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, जो भी फोर्स लग रहा है इस मास पे, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, है कि नहीं? अगर वर्क डन बाय फर्स्ट पाथ इक्वल टू वर्क डन बाय सेकंड पाथ आया तो क्या होगा? तो हमने प्रूव कर दिया कि क्या ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, है कि नहीं? Yes or no, student? This is how we prove it. Got it? How should we prove it? समझ में आया है कि नहीं? Okay, very good. Now students, what will I do is I'll take this mass m. Okay, I'll take for path 1, that is directly from A to C. Acha, abey. Now what I'm doing is there is this body of mass m and there is an inclined plane. ठीक है? तो मुझे क्या करना है, मुझे इस बॉडी को, जो बॉडी है मास एम, उसको मुझे ए से सी जाना है, ठीक है? उसको ए से सी जाने के लिए बोलना है. तो उसके पास 2 पाथ होगा ना, एक पाथ होगा डायरेक्टली, जो पाथ है वो ए टू सी डायरेक्टली पाथ में जाएगा ना, यस और नो? और जो पाथ एक और है, सॉरी पाथ 2 है, जो पाथ 2 है
वो जाएगा कहाँ से, ए से बी तक, है कि नहीं। मतलब देखो, एक पाथ होगा यहाँ से ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा और यहाँ आ जाएगा, है कि नहीं। एक और पाथ होगा, ए से बी जाएगा, ए से बी जाएगा, फिर उसके बाद बी से ए जाएगा। यस, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि पाथ पाथ तो हमें पता चला कि दो पाथ है, अभी हमें चेक करना पड़ेगा इसका वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन किसका, बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर जो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स पाथ वन और पाथ टू का अगर सेम आया, तो हमने प्रूव कर दिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कि कंजर्वेटिव फोर्स है। ओके, अगर हमने प्रूव नहीं कर पाए, इसका मतलब क्या है कि ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। बस काम खत्म, उतना ही करना है। इज इट क्लियर? अदर्स लेट मी नो। दावनगिरी स्टूडेंट्स, पार्थ, स्वीटी, चित्रदुर्ग स्टूडेंट्स, वेरी गुड। अभय, ओके, वेरी गुड सुमन। It's okay, Abhay. It's my duty to make sure that you understand everything. Okay, very nice. Yes, very good. Now you got the gist of it. Now, talking about path one. So what I'm doing, I want to move this object from here to here. Yes. So this will be the final path. Yes or no? Now, students, see over here. Can I say this is the gravitational force that is acting M into G, and let me take this as length L. That will be the displacement L, and if I take this as angle theta, so students, can I tell that angle between ठीक है L and the force mg as क्या, जो एंगल है वो है 90 प्लस थीटा, है कि नहीं। देखो, जो ये है mg, ठीक है, ये एंगल 90 है, और ये है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है कि नहीं, और ये है L। बेसिकली ये क्या है, एक मिनट रुको, दिस इज L, एस और नो। ये जो है ये L है ना, दिस इज L, एस और नो। स्टूडेंट्स लेट मी नो, ये जो L है, ठीक है, अगर ये L है तो जो इसका एंगल है, ये जो एंगल है ये 90 प्लस थीटा होगा ना, तो मैंने वही लिखा, है कि नहीं, यस और नो। और आपको पता है कि जो वर्क हो रहा है वो इसी डायरेक्शन पे हो रहा है, यस और नो। नाउ स्टूडेंट्स, कैन आई राइट, वी नो दैट द फॉर्मूला वर्क डन इज व्हाट, एफ एस कॉस थीटा, है कि नहीं, एफ एस कॉस थीटा। आपको पता है अभी जो ये थीटा है ना, ये वाला लेट मी टेक थीटा डैश, ये थीटा डैश है ना, जो दिस इज थीटा डैश, ये थीटा डैश इज 90 प्लस थीटा, देन वर्क डन इज व्हाट, एफ एस कॉस 90 प्लस थीटा। मैं लिख सकता हूं ऐसे, यस। नाउ स्टूडेंट्स, कैन आई राइट वर्क डन फॉर पाथ वन, ये पाथ वन के लिए क्या होगा, कॉस 90 प्लस थीटा क्या है स्टूडेंट्स, लेट मी नो, कॉस 90 प्लस थीटा क्या है, let me know, is what, fs what students, it is minus sin theta। और आपको पता है जो फोर्स है वो what, mg है। so can I write students this as for work done for path 1 as mg minus जो s है वो l है ना, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो l डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, so can I write minus mgl sin theta। ये वर्क डन फॉर पाथ वन, यस और नो स्टूडेंट्स, लेट मी नो। देखो क्या हुआ कि जो मैंने एंगल है, जो ये एंगल है वो एंगल बिटवीन व्हाट, बिटवीन L, जो L है और द फोर्स m इंटू जी है वो क्या है 90 प्लस थीटा। और स्टूडेंट्स मैं इस तरफ भी बोल सकता हूँ ना, आपको पता है ना कि इंक्लाइंड प्लेन के लिए अगर ये एक mg मास था और ये mg था और ये थीटा था, तो आपको पता है कि दो कंपोनेंट आ जाएगा ना, कौन सा दो कंपोनेंट, एक है mg sin थीटा और एक और है mg cos थीटा, है कि नहीं। तो कैन आई से दैट जो ये फोर्स आ रहा है ना वो mg sin थीटा आ रहा है, और आपको पता है कि जो दोनों तरफ अलग अलग है ना, एंगल बिटवीन ये दोनों अलग अलग है, तो मतलब
साइन थीटा एक तरफ है, एल डायरेक्शन एक तरफ है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट एक तरफ है. फ्रॉम दिस वी कैन टेल दैट एफ इज इक्वल टू व्हाट, mg साइन थीटा इंटू एल. एल की, क्योंकि आपको पता है थीटा क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एफ इज इक्वल टू mg, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एल, एंड विच इज इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट इज माइनस mg l sin theta. yes or no? f is equal to minus mg l sin theta. ऐसा भी बोल सकते हो ना मैं, how minus mg sin theta over here, which कहा भाई. देखो आपको पता है कि जो फोर्स एक्ट कर रहा है ना वो क्या है, mg है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स है कि नहीं. और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एल है ना, दिस इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं. देखो अभी यहां से यहां आ रहा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, एल हो रहा है. तो कैन आई टेक एस एज एल, ये भी ले सकता हूँ, और जो फोर्स है mg ले सकता हूँ. तो मैंने सब्स्टिट्यूट किया, फोर्स में mg सब्स्टिट्यूट किया, s को l कर दिया, और cos 90 plus theta is basically what, minus sin theta. yes or no? Students, let me know in the chat, did you understand it or not? तो फर्स्ट पाथ के लिए क्या हो रहा है, माइनस mgl sin theta हो रहा है. अब लेट मी नो. ओके वेरी गुड. ओके चित्रदुर्ग स्टूडेंट्स, स्वीटी तीर्थ, ओके गुड, वेरी गुड. अब हमारे पास देखो फर्स्ट वाला आया, ठीक है, सही है, अच्छी बात है, यह सब सेट है हम, वेरी गुड. अब हम क्या करेंगे कि पाथ 2 के लिए फाइंड आउट करेंगे, ठीक है. पाथ 2 बेसिकली क्या हो रहा है, देखो मैं यहां से यहां, ओके रुको, मैं यहां से यहां तक आ जाऊंगा, फिर मैं यहां से यहां तक आ जाऊंगा. तो मेरा डिस्प्लेसमेंट यहां हो रहा है s, और यहां हो रहा है कि नहीं s. यस और नो स्टूडेंट्स, मुझे ये बताओ अभी, मुझे ये बताओ, मैं अगर a से b लूंगा, ठीक है, और आपको पता है कि जो एक्ट कर रहा है वो mg एक्ट कर रहा है, जो फोर्स एक्ट कर रहा है mg. मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ये सही है, यस और नो. और जो फोर्स है वो क्या है, mg है, एंड डिस्प्लेसमेंट में sc लेता हूं. कॉस क्या होगा अभी ये बताओ, व्हाट इज द एंगल थीटा ओवर हियर, इसके लिए क्या एंगल होगा, इसके लिए जो a इंटू बी के लिए ना एंगल थीटा क्या होगा, बता सकते हो. देखो डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है, इधर ये हो रहा है, व्हाट इज दैट, द फोर्स इज एक्टिंग ओवर हियर, इट इज 90. पार्ट 180 प्लस थीटा कैसे हो गया, चित्रदुर्ग स्टूडेंट 0 कैसे हो गया, इट इज 90. यस और नो. देखो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इस तरफ हो रहा है, जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो mg इस तरफ है. तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री है ना. तो ये 90 डिग्री हो जाएगा ना, cos 90 है भाई, sin 90 नहीं है. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 11th ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಹಾ ಸರಿ ಸರಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಈ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಫಾರ್ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂತ ಆಯ್ತು, 0 ಆಯ್ತಾ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಬಿ ಇಸ್ 0, yes or no. Now I want the work done from B to C. Now you know that this over here, the gravitational force is acting downwards, yes, and the displacement is happening in this upward direction, yes or no. So work done for B to C, can I take it as mg as cos of what is the angle between s and mg, very good, that is 180 degree, yes or no. And you know that work done from BC is equal to mg, displacement is what over here s, yes or no, yes or no students. So can I take it as what mg, let me take mgl sin theta, yes or no. See over here, if this is l, अगर ये l है, ठीक है, if this is l and ये थीटा है, तो इसका दो कंपोनेंट होगा ना, इसका एक l sin cos थीटा होगा और एक l sin थीटा होगा, है कि नहीं. उस तरफ भी देखो, तो see I'm taking s and l over here and it will be what sin, sorry,
Just a second. Okay. This will be mgl cos theta is what? Minus 1s. है कि नहीं? है कि नहीं students? It will be cos 180 or what? What it will be? Okay, wait. Over here, yeah, the angle is 180 degree over students. Just a second, but we can't consider this. Okay, we can't directly take it that cos 180 degree. Okay, now see over here it is cos of, see over here, just a second, we can't take cos also. We need to understand it in a different way over here. Students, over here, as I said, if this is L, the displacement is L, अगर ये L है और ये एंगल थीटा है, तो इसका दो कंपोनेंट होगा ना, इसका एक L cos थीटा होगा और एक L sin थीटा होगा, है कि नहीं? एक और कंपोनेंट होगा L sin थीटा, है कि नहीं? So can I take this displacement as L sin theta? है कि नहीं? Yes or no? Now from work done as, we can take from B to C as, you know that the force is acting is mg, yes, and the displacement is what? L sin theta, but it is acting in the opposite direction, we take it as minus. So see over here, from here we get the work done, the total work done as from A to B and from B to C, and from here we get 0 plus minus mgl sin theta, and we get total as what? Minus mgl sin theta. समझे? Did you get it, student? Sorry, did you get it? Did you get it or not? See over here we had to do a different angle over here. That is why. Okay, students, over here, see, अगर ये एक inclined plane है, ठीक है, ये L है. If this is L and this is theta, so can I draw two components of theta? This is L cos theta and this is what? L sin theta. है कि नहीं? In vector we can transfer the vector 2 over here. है कि नहीं? Uttarakhand students, then if that is the case, students, can I write this as L sin theta? Uttarakhand students, yes. So that is how I got this as L sin theta. And you know that the force is acting downwards and the displacement is happening upwards. Then it is in the what? Opposite direction. The angle will be 180 degree. Yes or no? Then it will be what? Work done from A, B, C. A, B, C. It will be minus mgl sin theta. है कि नहीं? And basically what is happening over here? This is work done by the second path. अब मुझे ये बताओ, वर्क डन बाय फर्स्ट पाथ क्या आया? माइनस mgl sin थीटा. और वर्क डन बाय सेकंड पाथ क्या आया? माइनस mgl sin थीटा. तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि वर्क डन इज इक्वल टू फर्स्ट पाथ इज इक्वल टू सेकंड पाथ, बोल सकता हूँ? लेट मी नो. YouTube students, let me know. Yes or no, students? Then sweetie, very good. If that is the case, you know that if the work done is equal, then we say it as what? Conservative force. We say that it's a conservative force. Now you got to know that what? Gravitational force. Abhay, see over here, देखो, ये जो वर्क डन था इस पाथ के लिए वो 0 आया, वो सही है. और अभी देखो जो वर्क डन हो रहा है ना, इसके लिए एक mg इस तरफ है. देखो अगर एक फोर्स इस तरफ है और एक एक्ट कर रहा है इस तरफ है कि नहीं? जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरफ है, तो आपको पता है ना कि वो जो फोर्स होगा वो माइनस mg, सॉरी, वर्क डन होगा, जो वर्क डन होगा वो क्या है? माइनस एफ इंटू एस. ये आपको पता है कि नहीं? यस, आई शो उत्तराखंड स्टूडेंट्स, डोंट वरी. हाँ, इसलिए आपको आया जो माइनस एफ एस आया वो डायरेक्टली आया. और आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट एल जो हो रहा है ना वो एल साइन थीटा. यस, ओवर हियर दिस इज द प्रीवियस स्लाइड. अबे इज इट क्लियर? Is it clear? Let me know.
Okay, students. Yes. Okay. Good. Okay. Others, I'll give 2 minutes of time or 1 minute of time to grasp. Okay. So I'm talking a lot. So I'm talking for last 1.5 hours. So I'm breaking one. I'm taking 1 minute of break. In that 1 minute of break, let me know is there any doubt or not. Okay. So let me show everything. Okay. So here is what the path that is taking. So please let me know. अच्छा path अच्छा समझा wait just a second path this one right this one you're asking ये ग्लव्स है ये ग्लव्स क्यों है क्योंकि मैं पेन टैब में लिखता हूँ ना तो जब हम पेन टैब पे लिखते हैं अगर मान लो सिर्फ ग्लव्स है अगर ग्लव्स नहीं है सिर्फ हाथ है तो फ्रिक्शन आ जाता है हमने कहा पढ़ा ना वी हैव टॉक्ड अबाउट इट है कि नहीं तीर्थ कि जब लिखते हो तो फ्रिक्शन आ जाता है तो क्या होता है कि लिखने में बहुत दिक्कत आ जाता है लेकिन अगर मैंने इसको इसको लगा दिया जो ये है तो वो स्मूथ हो जाएगा बहुत स्मूथ है एक स्मूथ सरफेस जैसा हो जाएगा सो लिखने में यस लिखने में बहुत बहुत आसानी हो जाती है सो एक ग्लव्स है ये ग्लव्स है सो सबको डाउट हुआ होगा ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಾ ಓಕೆ ಹಾ ನೈಸ್ ಓಕೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ अच्छा हाँ okay so yeah one of the student asked and this is the gloves अच्छा okay 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 students ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ yes yes very good and I guess Davangere students have become little less active nowadays why is that is there an issue half gloves huh the thing is see Suman you need friction for this to writing yes or no अगर ये भी पूरा ग्लव्स होता ना क्या होता तो ये स्मूथ होता ना तो लिखने में दिक्कत होता लेकिन जब आप लिखते हो तो ये स्मूथ होनी चाहिए अरे भाई थैंक यू यस सुमन सो इसलिए ठीक है ओके वेरी गुड नाउ मूविंग अहेड ठीक है सब कुछ समझ में आया अब आपको एक चीज बताना चाहता हूं ठीक है वो क्या है अगर हमने एक क्या क्लोज पाथ लिया ठीक है ओके दावणगेरे स्टूडेंट्स अगर हमने एक क्लोज पाथ लिया मान लो मैं ए पॉइंट से बी तक जा रहा हूं फिर बी से सी जा रहा हूं सी से मैं डी जा रहा हूं डी से मैं ए आ रहा हूं यहाँ क्या हो रहा है कि मैं इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो क्या हो रहा है इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज सेम समझे तो क्या हो रहा है कि इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम है तो मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स इफ द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज सेम एंड इफ द फोर्स अप्लाइड is conservative if the force applied is conservative students then always remember what the work done will be what 0 so what is the condition very good what is the condition students the initial and the final what position is same that is mean that means what the displacement is 0 है कि नहीं लेकिन स्टूडेंट्स remember this ना भाई wait always remember this condition क्या है कि जो force है the force that is applied should be what always be conservative ये condition अगर satisfied है मतलब initial and ये जो first condition है और जो ये second condition है ये दो satisfied है ना तभी आपका वर्क 0 आ जाएगा समझे इज इट गुड है कि नहीं देखो I'll explain this okay let me do one thing let me take this what mass m from A to B then from B to C okay now I want work done by gravitational force from A to B मुझे ये बताओ gravitational force from A to B क्या हो जाएगा देखो ये एक्ट कर रहा है mg और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर
एस ऊपर की तरफ, तो मुझे ये बताओ वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स क्या हो जाएगा ए टू बी से? लेट मी नो स्टूडेंट्स, लेट मी नो. हाँ, दैट इज mg into s, है कि नहीं? दैट इज mg into minus s, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, दैट इज mg s, है कि नहीं? एंड सिमिलरली फ्रॉम b to a, देखो आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है mg और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है s, सो a की तरफ है, सो दैट इज वर्क डन फ्रॉम b to a है, तो क्या हो जाएगा? mg s हो जाएगा, है कि नहीं? ओके, पाथ over here you know that work done is fs cos theta. मुझे ये बताओ, अगर डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट मतलब फोर्स इस तरफ है, मतलब फोर्स इस तरफ है mg और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, तो इसके बीच में एंगल कितना है पार्थ? 180 डिग्री है कि नहीं? अगर आपने 180 cos थीटा को 180 डिग्री डाला तो वर्क डन इज व्हाट? माइनस fs आ जाएगा ना? यस, वेरी गुड पार्थ, समझा अभी? यस, वेरी गुड. सिमिलरली अब देखो, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इस तरफ है, सॉरी फोर्स इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, थीटा क्या है? 0. तो आपको वर्क डन इज इक्वल क्या आ जाएगा? एफएस आ जाएगा. तो वही लिखा मैंने, ये इसके लिए, ये इसके लिए. अब मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा? टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा? mg फॉर ए बी प्लस mg वर्क डन wg फॉर बी ए, सो क्या हो जाएगा? माइनस mgs प्लस mgs, देन इट विल बी 0. अब पता चला, देखो how we are getting the work done as 0. It is for what? It is for gravitational force, students. It is for gravitational force, and gravitational force is what? A conservative force. Yes or no? Gravitational force is a conservative force. इसलिए हमें क्या आ रहा है? इसलिए हमें क्लोज पाथ के लिए क्या आ रहा है कि what work done आ रहा है 0. So always remember students, work done in a closed path will be 0 if the force applied is a conservative force. Yes or no, students? Tumko students, let me know, are you able to understand or not? Yes, Chitragarh students, just a second. इसको मैं सही से लिखता हूँ, b into a, ठीक है, which is equal to mgs minus mgs plus mgs. अरे यार, एक मिनट सही से लिखता हूँ. Total work is equal to what? Work done from A to B and work done from B to A, and which is equal to what? Minus mgs plus mgs, and that comes out to be 0. Okay, Tumku students, very good. Davangere students, very good. Is it clear? Very nice. Now, very good. So students, here write a note. Okay, write a note. This is a very important note. Always remember this. It says that it is not necessary that when displacement is 0, when the displacement is 0, then what? Then work
work done is 0. Okay, always remember this. So see, over it is saying that it is not necessary that when the displacement is 0, इसका मतलब अगर s equal to 0 आया ना, इसका मतलब ये नहीं कि work done 0 हो जाएगा. ऐसा कभी हो, मतलब there are cases it will happen but not necessary always it will happen. Can anyone give an example for it? ऐसा कोई example है जो आप दे सकते हो? Can anyone tell me the example? Okay. Let me give the example then. See, over here, this is mass m. Okay, I'm applying a force, and this body is moving in this direction. है कि नहीं? ठीक है, मैंने पहले क्या किया, A से B मूव किया, ठीक है, वो डिस्प्लेसमेंट हो गया S, है कि नहीं? अभी मैंने फिर से क्या किया कि मैंने फिर से B से A मूव किया, ठीक है, B से एक मूव किया. So I'm applying a force S, force F and displacement हो गया S, ठीक है, ये यहां तक आ गया, ठीक है, क्या हो गया? So I'm moving from A to B, then B to A. मुझे ये बताओ, अभी डिस्प्लेसमेंट 0 है, अगर मैं A to B लाया और B to A लाया, रुको अबे just a second. So if I am moving from A to B, then B to C, displacement 0 है कि नहीं? Let me know if both the cases, then displacement is 0. Let me know, students. Yes or no? Others, let me know. Yes. Okay. लेकिन अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 है, अभी दिखाऊंगा कि आई विल शो यू दैट वर्क डन 0 नहीं होगा, ठीक है? मुझे ये बताओ, अगर मैं यहाँ पर अप्लाई, इफ आई एम अप्लाइंग अ फोर्स ओवर हियर, yes, you know that there is a frictional force that is acting, F, yes or no? Similarly, if I'm applying a force over here, there's a frictional force that is acting, F, yes or no? Now students, for A to B, if the work done by the frictional force अगर मैं लूंगा तो क्या होगा? देखो, सॉरी, if the work done by frictional force क्या होगा? देखो, ये फोर्स इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, you know that what work done is what? Fs cos theta, and you know that frictional force इस तरफ एक्ट कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरफ, so work done is what? minus Fs, है कि नहीं? Very good. Now this is for A to B. Similarly from B to A जब होगा तो क्या होगा? देखो, मैं अप्लाई कर रहा हूं फोर्स F इधर, ठीक है, और फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ है, और आपको पता है कि वर्क डन क्या होगा? वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इज व्हाट? Fs cos थीटा. तो क्या होगा? वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? माइनस Fs. अभी मुझे ये बताओ, टोटल वर्क डन क्या होगा? टोटल वर्क डन आपको पता है कि वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स फ्रॉम A to B प्लस वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फ्रॉम B to C. तो क्या हो जाएगा इसमें कि आपको जो आ रहा है वो क्या रहा? माइनस Fs प्लस माइनस Fs, और आपको जो आएगा माइनस 2Fs आ जाएगा, है कि नहीं? So work done is what? Of the total, what is minus 2Fs? हाँ, here the displacement is 0, but the work done is not the work done is not coming 0. So that is why I wanted to prove. Okay. Now students, if that is the case, so can I say the frictional force to be what? A non-conservative force. हमने प्रूव ही कर दिया, अभी हो गया ना? देखो, हमने अभी तक प्रूव क्या कर रहे थे? अगर एक फोर्स जो हो रहा है, एक फोर्स if it is a frame of reference,
Tumku students, I didn't get you. What do you mean by frame of reference is changed? I'm not changing a frame of reference. I'm changing the force that I'm considering. Abhay, see, Abhay, you need to go to my Newton's laws of motion. You need to check all the theory over there, okay? Have done everything over there. That is Newton's laws of motion. So make sure that you check it, okay? What is a frictional force? Okay? Okay, sure. Okay, very good. Very good. Tumko students, see, over here, I'm considering different type of force. That is what? Frictional force. Okay. See, if I consider over here gravitational force, mg अगर मैंने कंसिडर किया ना, अगर मैं mg कंसिडर करता, तो आपको जो वर्क डन आता वो जीरो आता. तो आपको जो वर्क डन अभी जीरो नहीं आया ना, वो क्यों नहीं आया? क्योंकि आप जो वर्क डन मतलब फोर्स ले रहे हो ना, वर्क जो फोर्स ले रहे हो, जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स, जो फोर्स ले रहे हो ना, वो क्या ले रहे हो? वो फ्रिक्शनल फोर्स ले रहे हो. वेट तुमको स्टूडेंट्स, ओवर हियर आई एम कंसिडरिंग द फोर्स टू बी फ्रिक्शनल फोर्स, है कि नहीं? अगर मेरा फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, मुझे ये बताओ, वर्क डन इज एफ एस कॉस थीटा, थीटा क्या होगा? व्हाट इज थीटा? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी फ्रिक्शन. हाँ, अगर थीटा 180 डिग्री है तो वर्क डन क्या आ जाएगा? इफ थीटा इज 180 डिग्री, माइनस mgs. यस, वेरी गुड. हाँ, सिमिलरली ओवर हियर, अगर मैं इस फ्रिक्शनल फोर्स को कंसिडर कर रहा हूं और इस s को कंसिडर कर रहा हूं, इसमें भी थीटा 180 डिग्री है कि नहीं? सो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स क्या आ जाएगा? माइनस mgs आएगा. तो हो गए काम खत्म. इसमें मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ ले रहा हूं? Yes, Suman, very good. Very good. So Suman said that you need to see for what force you are considering the what? Considering the work done. Okay. Okay. But students, see over here, I'm applying the force over here. Now you know that this is what the displacement is along this direction. Yes. And work done will be what? Fs cos 0. So work done is F into S. Similarly, from A to B, that is from A to B. And from B to A, if I'm applying a force F, now you know that displacement is along this direction. That is what? Work done is Fs cos 0. Then work done is what? F into S. तो वर्क डन क्या हो जाएगा? टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा? Fs plus Fs, and which is what? It is a 2Fs, which is basically not equal to 0. So basically what? So you need to consider for what force you are considering the work done. So that is what I said. See, अगर displacement 0 है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो वर्क डन है वो 0 आ जाएगा. देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए 0 आ जाएगा, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स के लिए क्या आ जाएगा? 0 नहीं होगा. और जो अप्लाइड फोर्स है उसके लिए भी 0 नहीं आ जाएगा. यस और नो? तुमको स्टूडेंट्स लेट मी नो. तुमको स्टूडेंट्स, so Tumkur students has left the class. I don't know why. If they are asking doubt and leaving the class in the middle, that's not good. समझ में आया अभी? Is it good? YouTube live students, let me know. And students, देखिए ये थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन समझो कि जो भी हम कर रहे हैं ना, वो क्या कर रहे हैं कि अलग अलग फोर्स के लिए कर रहे हैं. सुमन, सुहेब, अभय, बागलकोट स्टूडेंट्स, बಳ್ಳारी स्टूडेंट्स, चित्रदुर्ग स्टूडेंट्स, दावणगेरे, उत्तर कन्नड़ा, पार्थ, स्वीटी, लेट मी नो, इज इट क्लियर और नो?
Good. Others? Okay. Good. See, I need to make sure that everyone has understood. Okay. Everyone has understood. Okay. Very nice. Uttarakhand students. Now, if that is the case, students, actually we had to cover non-conservative forces. But yeah, it's okay. Today we are stopping over here. Okay. Okay. Very good. In tomorrow's class, we'll be continuing with what non-conservative force. What is this non-conservative force? Okay. Now you came to know that frictional force is a non-conservative force. So from here, we'll be talking about it. And also we will be talking numericals based on it in the tomorrow's class. So before ending today's session, so what and all we talked about today, students? We quickly recalled everything, yes or no? Then we talked about conservative force. In that, we came to know that it what the work done by the path is always equal, yes or no? It doesn't depend on the path taken, it depends on the initial and फाइनल पोजीशन है कि नहीं. फिर हमने देखा कि जो क्लोज पाथ है अगर जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है तो क्या आएगा, वर्क डन 0 आ जाएगा, ऐसा नो. एंड ऑल्सो वी सॉ दैट जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. Yes, Suman, because we got for the F applied as what, work done 0 नहीं आ रहा है ना, तो क्या है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है. वेरी गुड. So that's all for today, students. YouTube plus students, that's all for today. Thank you for attending. If you have any doubt, you can stay in the class. Okay. Okay then. Take care. Bye bye. Students, over here.